today let's start with chapter number 5, that is life in the temperate grasslands. So in this chapter I will tell you about the temperate grasslands, right? Prairies and beds. So in the previous chapter you have learned about the tropical rainforest where trees are the main vegetation. So grasslands can be defined as region where grasses form a dominant type of plant life. So I will tell you about the two types of temperate grassland, one that lies in North America, that is prairie, and welds that lies in the South Africa. So first let's study about the prairies. So prairies, what are they? They are the meadow grassland. It stretches between Rocky Mountains in the west or Great Lake region of Canada in the USA in the east. Right, the treeless plain that extremely fertile due to chernozem, which is the best soil for cultivation of wheat. यहाँ से बहुत सारे रिवर ड्रेन करती है इस रीजन से, जैसे मिसिसिपी एंड ट्रिब्यूटरी. और जो कैनेडियन प्रेरीज है व्हाट दे इंक्लूड प्रोविजंस फ्रॉम अल्बर्टा टू ओंटारियो. सो इफ वी टॉक अबाउट इन द यूएसए, जो आपके प्रेरीज है वो एक्सटेंड करते हैं ओवर द नॉर्थ सेंट्रल स्टेट फ्रॉम मोंटाना टू कंसास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. राइट, द प्रेरीज हैव फ्लैट स्लाइटली अंडरलैपिंग टेरेन. ठीक है, फ्लैट है, स्लाइटली अंडरलेटिंग टेरेन है. लैंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 900 मीटर इन द वेस्ट अलॉन्ग द स्लोप ऑफ रॉक. यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, जो स्लोप्स हैं, वो दे जेंटली स्ट्रेच टुवर्ड्स द ईस्ट. एरिया इज ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स एंड लेक, जैसे आपकी सस्केचटावन, विनिपेग लेक लाइक कनाडा, मिसिसिपी रिवर जो आपकी यूएसए में है. राइट, देन वी हैव क्लाइमेट. So climate, the region being located in the middle of the continent experience continent type of climate. यहाँ पे warm summer temperature है जो lower करता है around 20 degree Celsius and cold winters, right, as low as -20 degree Celsius and it receives moderate amount of rainfall. जो rainfall होती है वो कैसी होती है? Moderate होती है. So that's why it provide good condition for the growth of grasses. Now a skilling feature is winter where Chinook winds blow. Rockies से Chinook निकलती है Pacific side से, ठीक है, और it sink down and below into the Canadian prairies. If we talk about flora and fauna, so we can say that they are dependent upon rainfall during growing season. जो prairies है, it has limited to short grasses, shrubs and scattered trees. Main species of trees are willows or elders. और जो trees होती हैं ये mostly grow करती है along the bank of river and the lakes and also the mountain slope. Original grasslands have now been converted to farmland. ये short और sparse grasses जो है आप देखेंगे they are suitable for cattle rearing. American buffalo, bison, badger, coyote, antelope, prairie dog, rabbit and gopher. ये क्या है? These are native animals that are found over here, जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. Right, then we have people. Prairies में जो लोग हैं वो nomadic हैं, semi nomadic हैं. राइट, कुछ नोमैडिक है, कुछ सेमी नोमैडिक है. दे आर हंटर एंड फूड, हंटिंग और जो फूड गैदरिंग है यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन. ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जो ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज है? दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर. राइट, फार्मर यूज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग स्पेशली फॉर व्हीट कल्टिवेशन. कंबाइंड हार्वेस्टर एंड ट्रैक्टर्स आर वाइडली यूज्ड. प्रायर टू एक्सपोर्ट जो व्हीट है वो जो टॉल स्टील्स आपके टावर्स होते हैं जिन्हें हम सिलॉस कहते हैं उसमें देखने को मिलते हैं. इनको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. राइट, जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप यहाँ पे ग्रो करते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके व्हीट, मेज, बार्ले, सोयाबीन, पोटैटो. कॉटन इज ऑल्सो प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इन द वार्म एंड सनी एरियाज ऑफ द साउथ. और जो प्रेरी है वो लार्जेस्ट कॉर्न ग्रोइंग एरिया. सम एरियाज ऑफ द प्रेरीज रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पार्स. राइट, द एरिया आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग. और जो मेन ऑक्यूपेशन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन. राइट, एंड द कैटल्स where do they are reared? They are reared on the big farm, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ranches कहते हैं. What we call them? Ranches. Now bison, antelope, poultry, they are reared by European settlers in America. जो prairies people है, what they do? They rear cattle. They are known as cowboys and they use horse and dogs. ये horse और dogs पे use करता है cattle को manage करने के लिए. Dairy farming is concentrated in the Great Lake region. It also supports the food processing industries in India. जो availability है किसकी? Variety of minerals and power resources. Development of heavy and consumer good industry जैसे Chicago, Indianapolis, right, Minneapolis, Kansas City, Denver. They are the important cities in the prairies in the US.
इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सिटीज इन कैनेडियन प्रेरिस, आपका विनीपेग हो गया, एडमॉन्टन हो गया, कालगरी हो गया, ठीक है, और सस्केटॉन हो गया। नेक्स्ट इज वेल्ड। इफ वी टॉक अबाउट वेल्ड, इट्स मीन फील्ड इन टच, राइट? It is the name given to the temperate grassland that located in the eastern part of the plateau of South America, right? So it has slope from east to west. We have high veld, which is between 600 meter to 1100 meter. The range of hills are with watershed, which is RTs, means that इसका जो altitude है वो 1700 से 1800। ये ऑरेंज जो रिवर से ड्रेन होती है। फिर टॉक अबाउट इट्स क्लाइमेट, देखो एक तो ये क्लोज टू सी है, राइट, विच हैव हाई एल्टीट्यूड। समर जो होती है वो नवंबर जनवरी वार्म होती है, और जो विंटर होती है वो आपकी जून और अगस्त में होती है, जो कोल्ड और ड्राई उल्टा होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा समर में गर्मी होती है और विंटर में ठंड होगा, उल्टा होता है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फोना, so the vegetation is very scanty because of poor rainfall, right? The wells have fine and drought resistant tree. In few parts of the well, thorny bushes, जैसे आपकी मोरोला हो गई, अकाकिया हो गई, ये मिलती है। Lions, leopard, cheetah, kindu, they are the main animals that are found over there. People originally inhabited the wells, right? उनको हम खोई खोई कहते हैं, they are the real people. मेन ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग, फार्मिंग, कैटल रियरिंग। फार्मिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो रेनफॉल है, और आपकी वहाँ पे देखोगे रेनफॉल पुअर है, लो रेनफॉल, पुअर सॉइल एंड ओकेजनल ड्रॉप होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ज़्यादातर जो क्रॉप उगाए जाते हैं वो आपके कैश क्रॉप होते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, कोकोनट, टबैको, दे आर ग्रोन ओवर। व्हाट आर दीज आर द क्रैश क्रॉप, राइट। कैटल रियरिंग दे आर प्रैक्टिस इन द वार्म एंड wetter eastern part, while sheep are reared in cooler and drier western part. Dairy products, meats, they are all obtained from cattle. Beef is also exported. यहाँ से beef को export करा जाता है to southern European countries, and sheep rearing is very important in the highway. जो मैरियोना sheep है, एक quantity wool देती है, और मोहर जो है वो अंगोरा गोट है। साउथ अफ्रीका is a major producer and exporter of the wool in the world. Weld is rich in minerals. Gold, where it is found? It is found in the watershed. Mining of gold and diamonds has attached the Europeans to South America. Johannesburg is called the gold capital of the world. और gold mines का जो किम्बरले है आपका, प्रिटोरिया है, ये amongst the क्या है, richest diamond mining. Minerals wealth was previously exported to England as a raw material, and what happened gradually is the reason है what it become British colony. But now the tree from British control, and it has many food processing center and well developing industry. Mineral जो होता है वो wells, मतलब जो well furnished है, and they have well furnished transport system, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now let's do the exercise. Now tick the correct option. First is Kimberley and Pretoria are amongst the richest. They are the diamond mining towns. Acacia and dash grows in high beds. कौन कौन ग्रो करता है? Acacia and your marula. Acacia and marula. Dash is the important in high belts. क्या important है high belts में? Agriculture. The cattle are reared on big farms, जिन्हें हम क्या कहते हैं? Ranches कहते हैं. What we call them? Ranches. Now fill in the blanks. Some areas of dash receive very little rainfall. Some area of wells. Dash and dash are primary occupation. Cattle rearing, agriculture. Dash are the most dominant vegetation, that is grasses. Dash prairies are ready for wheat cultivation. Treeless plains are extremely fertile due to, किसकी वजह से fertile होते हैं? ह्यूमस की वजह से. The prairies are found both in, जो prairies है वो दोनों मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं और साउथ अफ्रीका में मिलते हैं.
या आप कनाडा भी लिख सकते हो। साउथ अफ्रीका में हमें वेल्ड्स मिलते हैं। नाउ प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड्स जो है वो आपको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। पंपास, साउथ अमेरिका। देन वी हैव प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। स्टेपीज, यूरेशिया। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। नाउ राइट T for true and F for false statement. South Africa is a major producer and exporter of cotton in the world. That is false. The grasslands are called seas of grass. It's true. Some cash crops such as sugarcane, cotton, and tobacco are grown in wells. It's true. Red grass grow in high wells. It's true. Prior to export, wheat is stored in tall steel towers, जिसको हम silos कहते हैं. It's true. The main species of tree of prairies are willows and elderfalls. Wells की हैं, not of prairies. Now answer the following question. Discuss about the occupation of the people and the crops grown in well. What are the main economic activities and the grown in the prairie region? Which place is called gold capital of the world? Kimberley. Name some food crops grown in wells. Wheat, rice. Name the primary occupation of the people. जो लोग एग्रीकल्चर की प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. Name some animal found in prairies. Bison, deer. ठीक है. What is the temperature in prairie during summer and winter? That you have to get. Right. This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.